okay, ठीक है. Right now it's okay, I think. Okay, sir. Okay, so I hope right now everything is okay. Now voice is clear. Okay, good. Yes, sir. Because everything is okay right now, everything is fine. We can start. Okay. So see here, what I was telling you, x square equals to 4ay. So obviously, all of you got it right because y has maximum power 1. So it's obvious कि जो अपना ग्राफ होगा, उस particular ग्राफ को y axis के क्रॉस क्या होना चाहिए? Symmetrical होना चाहिए. So see here, if I plot my curve, my plot should look like this. This will be your curve of x square equals to 4ay. अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहना है मेरा? अगर तुम्हें ये केवल दो पर्टिकुलर इक्वेशन याद है, if you are able to remember these two equations, that is more than sufficient. Okay, just remember these two equations and just remember these two shapes. इसमें कई स्टूडेंट्स को यार कई सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर ये ग्राफ ऐसा कैसे जा रहा है, ऐसा कैसे जा रहा है, सर ये ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है. तो मेरा ये कहना है कि सारे विद्यार्थी ध्यान दें, ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है, इस तरह के व्यर्थ के प्रश्नों को सोच के अपना समय बर्बाद मत करें. क्लियर? Why I am telling you all this? Reason is quite simple. क्योंकि डिटेल में तुम लोग को स्टडी करना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन मैथमेटिक्स. वहां पे सारी चीजें तुम्हें डिटेल में बता दी जाएंगी. तो बच्चों फिजिक्स में अपने को क्या करना है? फिजिक्स में मैंने बताया कि अगर ऐसा होता है तो होता है ना? अगर ऐसा होता है तो होता है. That's all. Just remember this and that's more than sufficient. Okay. तो इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. Right now it's okay, sir. Fine. Okay, Rishabh, good, very good. Nikita, Aman, done. Okay, so everybody is done. Shall I rub the board? Okay, so I'm getting the response like all of you are done with it. Okay, sir. Okay, that's not a problem. Vinayak sir will let you know in detail. Vinayak sir तो आपको बहुत डिटेल में बताने वाले हैं. Okay, done. See, now because we have already done straight line as well as parabola. Next thing which we will study about is circle. Let's try to understand what is a circle. Okay. अब यहाँ पे देखो क्या होता है. Basically, whenever in the class, sometimes what happens if I ask the definition, like because all of you guys are right now online, तो सामने तो हो नहीं मेरे, ठीक है? But sometimes if the students are sitting in my class and I simply ask them a simple question like what is a circle, max to max 2 या 3 स्टूडेंट ऐसे होते ही हैं जो डेफिनेशन उनकी ये होती है, चल बेटा बता सर्कल होता क्या है. They will simply say बहुत मासूमियत के साथ, सर वो गोल होता है. ठीक है, सर्कल क्या होता है? गोला होता है. That's not a definition. Clear? Okay. So let me ask you, who wants to define circle? Like how to define circle? A closed curve. Okay, so you are right. What is a circle? A closed curve. See here. This is also a closed curve. Is it a circle? Answer is no. Point at equal distance from one common point. Okay, that is right. That is right. Aman, your definition is very close to the actual definition. Point at equal distance from one. First, let me know. All of you, just let me know. Okay, just let me know what do you think about circle. Whatever comes into your mind. Like Soumya, closed curve. Yes. Very close to the right answer. Aman has given a definition like point at equal distance from one common point. That is also right. Okay. Anyone else? Okay. Aman is typing and is also typing. It's infinite points. Okay, that is also right. But infinite points. या कोई भी कर्व अगर तुम ड्रॉ करोगे, see here, infinite points. Aman, see here, if you draw a line, तो इस पर्टिकुलर लाइन में कितने पॉइंट्स है? Infinite points. If you draw a line, how many points are there? Infinite points. Sir,
Yes. Sir, infinite points at equal distance from a center. So next, center we cannot use. You can use a single point. Single point. Single point. Yes, that's right. Collection of infinite points from a single point is known as circle. That is also right. Okay. Anyone else? Aman has given two definitions. Siddhi, round plane surface. Okay, Siddhi, your definition is interesting. Just a minute. Round plane surface consists of one point equidistant from a fixed point. ठीक है. And closed curve with infinite points with points at equal distance from one ground point. Okay. Okay, that's right. That's right. So a lot of you are giving the right definition. That's not a problem. So circle basically है क्या? See here. Okay. Basically, if you talk about a circle, तो भाई साहब ये हो गया अपना circle, and let us assume the center is given as h, comma. The center is given by the coordinates h, comma k, and this radius is given as r. We are assuming a particular circle whose center is given as h, comma k, and whose radius is given as r. Okay. So see here, how to define a circle? Simply collection of points. What are these? Or infinite points. As Aman, you told me, क्या होगा basically ये collection of points or infinite points which are equidistant from a fixed point. And what is that particular fixed point? That particular fixed point is center. Okay, guys. तो इसी को कई बार standard language में भी हम कहते हैं. It's the locus of point. What is this? It's basically the locus of points which are equidistant from a fixed point. Clear, guys? Okay. Let me tell you once again. Whether you pronounce it collection of point equidistant from a fixed point, that is right. But कुछ चीजें जो होती हैं थोड़ा standard language में अगर उसको हम लिखें, so it is the locus of the points which are equidistant from a fixed point. Okay. Locus मतलब होता है बच्चों path. जब भी आप बात करते हैं लोकस, तो लोकस को हम कहते हैं पाथ ऑफ पॉइंट्स. जो भी पॉइंट्स का पाथ होगा उसी को हम कहते हैं लोकस. और सिंपल इन टर्म्स ऑफ सिंपल हिंदी वी कॉल इट बिंदुपथ. हैव यू हर्ड दिस वर्ड बिंदुपथ? ओके, सो व्हाट डू यू कॉल दिस बिंदुपथ इन मराठी? Okay, locus simply means path of points. How will you answer this? What do you call this path of points in Marathi? What is the alternative word? Not okay. I'm asking a question, Aman. Path of points. Is there any Marathi word? Can you tell me? हिंदी का तो यार बता दिया मैंने. Path of points are bindupath. So what will be its? By the way, bindupath is a Sanskrit word. Bindu mark, यार. Urjita, that's cheating. That's cheating. Okay. Bindupath को तुमने mark कर दिया. It doesn't mean it's a different word. Bindu mark. Okay. Bindu mark. Okay. So, Urjita, actually you are trying to say that in Marathi we can call this Bindu mark, right? Okay, guys. So till now I am not able to find out the right answer. ठीक है, कुछ भी नहीं बता रहे हो तुम लोग. आप उर्जिता ने बताया बस सर बिंदु मार्ग बोलेंगे इसको. बट मार्ग इज आल्सो संस्कृत यार. मार्ग is also Sanskrit, pure Sanskrit. Marg or path. Marg or path, these are pure Sanskrit words. If you say rasta, so rasta I think it's a Urdu word. Sir, what is a Marathi word? Okay, just a minute. What? What, sir?
हाँ, तो व्हाट में ऐसा करके कुछ उसको कंस्ट्रक्ट करो ना, वो बताओ ना मुझे. अच्छा, लेट्स डू वन थिंग. You think about this problem. What will you call Bindupat in Marathi? Okay. कल की क्लास में okay. Sometimes I'm not able to pronounce it. Timba what? Aishwarya. Timba what? Am I pronouncing it right? Timbavat or Timbavat? टिम्बवत. Timbavat. Okay, Timbavat. So I don't have any idea, but मैं इसको कंफर्म करूंगा. ऐश्वर्या इज द फर्स्ट स्टूडेंट जिसने मुझे कोई अल्टरनेटिव दिया है. टिम्बवत. Nilaksha. Okay, she's also saying. यार तुमने तो इतना टिपिकल वर्ड. Nilaksha, can you pronounce it for me? गुणांचा मार्ग. गुणांचा मार्ग. गुणांचा मार्ग. ओके, गुणांचा. हाँ, ये भी हो सकता है, बट इसमें राइट कौन सा है? गुणांचा राइट है या टिम्बावत राइट है, ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ. Hello, हेलो. sir. It is Gunancha Marg. गुणांचा मार्ग. ओके ओके, इट कैन बी राइट. तो गुणांचा भी एकदम इस संस्कृत का वर्ड नहीं है, हिंदी का भी नहीं है, तमिल से भी नहीं है. तो मेरे ख्याल से ये आई थिंक मराठी में ऐसा कुछ होना चाहिए, या तो गुणांचा मार्ग होना चाहिए या तिम्बावत होना चाहिए. Okay, you guys just keep thinking about this problem and let me know in the next class. ठीक है, कंफर्म करके बताना मम्मी पापा से. Okay, चलो भाई, मैं भी इधर थोड़ा सा कंफर्म करता हूँ. So see here, let's talk about the equation. एक काम करते हैं, सर्कल को फटाफट फिनिश कर लेते हैं. If we talk about the equation of the circle, what is the general equation? The general equation is x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. Remember this equation. This is the generalized equation of a circle. Okay. What is the equation? X minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. Now, ये इक्वेशन तुम्हारी स्ट्रेट लाइन से कैसे डिफरेंट है? रिमेंबर, स्ट्रेट लाइन में x की मैक्सिमम पावर 1 थी, y की मैक्सिमम पावर 1 थी. क्लियर? जब हमने पैराबोला की बात की तो उसमें x की पावर अगर 2 है तो y की पावर 1 है, एंड इफ y हैज पावर 1 तो x की पावर कितनी होती है? 2 होती है. बट इफ यू टॉक अबाउट द सर्कल x minus h का होल स्क्वायर, जब इसको स्क्वायरिंग करोगे व्हाट विल बी द पावर ऑफ x? आंसर इज 2. जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे y minus के होल स्क्वायर, व्हाट विल बी द मैक्सिमम पावर ऑफ y? द आंसर इज 2. So only in circle x and y both of them has maximum power as 2. तो जब भी तुम्हें इक्वेशन दिखे in terms of x as well as y, x और y दोनों के बच्चों मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 2 होगी. क्लियर? ओके. तो तुम्हें अगर x और y दोनों की मैक्सिमम पावर 2 दिखती है तो immediately you should follow like कि ये जो पाथ होगा that particular curve will be known as circle. अब इसमें स्पेशल केसेस आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दो. सपोज करो इस सर्कल की इक्वेशन मुझे लिखनी है. रेडियस इज 2 मीटर and this circle has center 0, 0. What will be its equation? अच्छा बताओ, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0. k की वैल्यू कितनी होगी? So 0. 0. So we can understand that h is equals to 0 as well as k is also 0. So what will be the equation of this circle? This will be x minus 0 y minus 0. Okay, equals to x square plus y square plus y square. Okay, x square plus y square equals to 4, and this will be our answer for the equation of this particular circle. Okay, guys, write down the assignment. अब मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, अच्छा यही तो बता दो, होमवर्क क्यों लेके जा रहे हैं. Suppose we have a circle like this, such that its radius is given as 2. What will be its equation?
मुझे चलो फटाफट बता दो इसको। अगर इस तरह की सिचुएशन है, व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द सर्कल? Okay, right now, okay, Nilaksha, eco problem is resolved, I think. Right now, my voice is audible, yes or no? Yes, Okay, sir. okay. Yes, sir. So what are the coordinates of the center? Okay, that you are supposed to find out. That is the question. Sir, 2 and 2. What is the equation? Sir, coordinates 2, 2. Yes, coordinates Yes, are. sir. Okay, that you are that यार ये तो बताना नहीं था ना, that you are not supposed to say. ये तो बाकी बच्चों को नहीं पता। यही तो क्वेश्चन था। Okay. ओपन कर दिया। भाई साहब यही तो क्वेश्चन था, यही तो नहीं बताना था, बट ठीक है चलो इट्स ओके। सी है, दैट्स सी है। अगर हमें रेडियस देखनी है तो दिस इज द सेंटर। अगर किसी somehow if you are able to find out the coordinates of the center, then you can find the equation of the circle very easy. See here, what is this length? 2 because it's equals to radius. What is this length? 2 because it's equals to radius. So what will be the coordinate of the center? That will be 2, 2. So equation is simple. What will be this circle's equation? Let me write down over here. This will be x minus 2 whole square plus y minus 2 whole square equals to r square, that is equals to 2 square, that is equals to 4. So if you ask me what is the equation of this circle, this will be the equation. X minus 2 whole square plus y minus 2 whole square equals to 4. And this will be our final answer. Okay, so the equation of this circle is clear to everyone? Yes or no? All of you guys? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों देखो मेन चीज हमने क्या सीखी? मेन चीज आज की क्लास में हमने कवर अप किया है द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एज वेल एज वी हैव कवर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पैराबोला, एज वेल एज वी हैव कवर्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एज वेल एज अ हाइपरबोला, ठीक है? बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट? Okay, Sakshi, you answer me. Oh, Sakshi, no, Shristi, yeah. Shristi, what is the most important point? And Aman also. Before ending this lecture, what was the most important point throughout the lecture? Tell me. जल्दी बता दो, फिर लेक्चर फिनिश करना है क्योंकि दूसरा लेक्चर शुरू करना है। तुम लोग बताते नहीं हो, इतने शांत शांत बैठे रहते हो, क्यों इतने शांत रहते हो तुम लोग? My voice is audible, yes or no? Yes, sir. Okay, yeah, okay, good. So what was the most important point of this lecture? Nobody is answering at all. Okay, Sir, I think it was a straight line concept, okay, next. by my Anyone else? opinion, sir. Okay, okay, good. That's all. I'm just asking about your opinion, guys. That's all. Sisti, Yes, sir. what was the most important point? So actually, I was just disconnected. Can you please repeat the question? The question is, throughout the lecture, what was the most important point? Okay, ठीक है. Without wasting time, let me remind you. The most important point was, भाई साहब बिंदु पथ को क्या कहते हैं? कल मराठी में एकदम अरे confirm sir. बताना मुझे, ठीक है? कल पक्का बताना मुझे, इतने साल हो गए आज तक मुझे बिंदु पथ का मराठी वर्ड बताया नहीं है. So it's a responsibility to all of you guys. You will let me know what is the meaning of bindu path. Okay? Okay, sir. Right. Okay, sir. Okay, done. So I Okay, hope sir. that was all from our side in physics.
In next class, I already told you, we'll start with elliptical shape as well as hyperbolic curves. Till then, that's all for today's lecture, guys. Bye-bye. Take care. And remember, we will have a break of 10 minutes. Okay? Bye-bye. Okay, sir. Take care. Thank you, sir. 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 Most welcome. Thank you मत करो, कल मुझे अब वो जरूर बताना। Yes, sir. बिंदु पर भैया ये मैं मानता हूँ।